ओके सो हेलो एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्लेलिस्ट। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब जो सामने का टॉपिक आता है, सो दैट इज फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, otherwise it is also called as photoelectric emission. Photoelectric emission. Fundamental laws of photoelectric effect, otherwise it is fundamental laws of photoelectric emission. The meaning of fundamental laws: the laws which does not depend upon any other system. एक ऐसे लॉज जो दूसरे के भरोसे है नहीं, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। उस चीज को हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट। क्लियर? तो इसके लिए बहुत सारी बेसिक चीजें हमारी पहले हो चुकी थी, बस उसको थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इफ देयर इज दिस इज इमिटर प्लेट, अगर ये हमारी इमिटर प्लेट है, इट मींस दैट इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। और जैसे ही इसके ऊपर कोई रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे, सो व्हेन देयर इज इंसिडेशन ऑफ रेडिएशन, clear, and there is a incidence of radiation, so radiation according to the Planck's quantum theory, Planck's quantum theory के हिसाब से ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशंस में there is a discrete packets, ये discrete packets होंगे इसके अंदर यहाँ पे, and this discrete packets have the energy, और ये discrete packets में हो गए that is bundle of energy. It is a bundle of energy and that is called as, and this is terms is called as photon. इसको चीज कहते हैं हम लोग photon. Clear? So it means that the photon, ये photon होता क्या है? Photon is a imaginary bundle, it is a bundle of energy packets. Otherwise it is a energy packets, and that energy should be a kinetic energy, and it is not the potential energy. हम लोग यहाँ जो energy लेते हैं इसकी, ये kinetic energy लेते हैं, and the energy of this photon, मतलब ये कितना energy carry करता है, so the energy carries by this photon is nothing but h into nu, so where nu is the frequency of incident radiation, otherwise it is a frequency of incident photon. ये जो nu है, so nu is a frequency, आपकी ये frequency है, frequency of incident radiation, otherwise incident photon. ये फोटोन की रेडिएशन, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, या अदरवाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो व्हेन दिस इज द एनर्जी व्हिच इज इंसिडेंट, यहां हम लोग जो एनर्जी लेंगे, सो दैट इज एनर्जी, सो E is equals to h into nu, where h is a Planck's constant, ये h आपका Planck's constant होता है, and the value of Planck constant, it is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule per hertz, or it is a joule into second. This is the standard value for this Planck constant. तो जो फोटोन की एनर्जी होती है, so that is energy is h into nu, and this energy is incident on this emitter plate. So when this energy is incident on the emitter plate, तो यहाँ emitter से electrons बाहर निकलेंगे, and this is the direction of electrons. When there is continuously emission, there is a continuously incidation of photon, अगर continuously incidation हो रहा है photon का on the emitter plate, अब जब emitter plate के ऊपर continuously incidation हो रहा है, so it means it emits the electron, and this energy is nothing but h into nu. Now, according to this Einstein theory of relativity, Einstein theory of relativity के हिसाब से जो energy यहाँ incident होती है, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझे, अगर मान के चलो E is equals to h into nu है, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं आपको अच्छे समझने के लिए, if it is 100 joule, अगर मान के चलिए 100 joule है एग्जांपल के तौर पे, so 100 joule is incident on the emitter plate,
और जब अगर 100 जूल इसके ऊपर इंसिडेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो 100 जूल यहां इंसिडेंट हुआ है, सो दैट 100 जूल इज यूटिलाइज्ड इन 2 वेज। 2 वेज में वो यूटिलाइज्ड होगी। पहला, दैट इज एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन दिस इमिटर प्लेट। जो एनर्जी यहां इंसिडेंट हो रही है वो एनर्जी 2 चीजों में यूटिलाइज्ड होती है। पहला यूटिलाइजेशन, सो दैट इज पहला यूटिलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन इस इमिटर प्लेट के ऊपर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को इमिटर प्लेट से बाहर निकलने के लिए यूज होता है। सो इट मींस दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी इज जो होगा कि भैया टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन सेपरेट होने के लिए दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एंड जो सेपरेशन यहां से होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द इमिटर प्लेट ड्यू टू द इंसिडेशन ऑफ एनर्जी, and that energy is equals to h into nu, and this phenomenon is called as a photoelectric. This is photoelectric work function, and this photoelectric work function denoted by W. And the energy which is incident on this emitter plate, जो ये एनर्जी यहाँ इंसिडेंट होगी इमिटर प्लेट के ऊपर, सो दैट इंसिडेंट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन 2 वेज। फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉन को सेपरेट होने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैरी करने के लिए। इट मींस टू ट्रैवल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर प्लेट टू द कलेक्टर प्लेट। यहां एक दूसरी प्लेट आपकी होगी जो कलेक्टर प्लेट कहलाएगी, सो दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट, एंड दिस इज इमिटेड इलेक्ट्रॉन we cannot take this potential energy, we only take this kinetic energy. So it means that this energy which is incident on this emitter plate utilized in 2 ways. First, to photoelectric work function. The meaning of photoelectric work function, that to separate the electron from the metal surface, and second utilization their kinetic energy. दूसरी आपका यहाँ जो होगा that is photoelectric work function, पहला utilization and then kinetic energy. So what are the fundamental laws of photoelectric effect? Fundamental laws क्या है इसके photoelectric effect के? So very simple fundamental laws कि when this radiation is incident on this emitter plate, there is emission of electron, and when there is emission of electron, so there is a collection of this emitted electron is collected by this collector plate, and hence the current is flowing through it. So we get the photoelectric current here. This is the first fundamental law कि जब भी कोई radiation कोई इमिटर प्लेट के ऊपर गिरता है या कोई मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है, सो देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड फंडामेंटल लॉज, देयर आर मल्टीपल फंडामेंटल लॉज। क्लियर? जितना यहां से हो सकता है हम लोग उतना इस चीजों को कवर करेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल लॉ कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड फंडामेंटल लॉज। व्हाट इज द सेकंड फंडामेंटल लॉज ऑफ दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन? यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहां से इमिटर प्लेट में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, सो ये टोटली डिपेंड करता है यहां पे इस रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है। The number of emitted electron from the metal surface is totally depending upon the intensity of incident radiation. ये इसकी इंटेंसिटी, अगर इसकी कम इंटेंसिटी हुई, अगर धूप अगर मान लो ज्यादा नहीं है, धूप अगर कम है, तो यहां इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो आपको यहां से कम इलेक्ट्रॉन इमिट होते हुए नजर आएंगे। So this is the second fundamental laws. What is the second fundamental law? The number of electron emitted from this emitter plate is totally depending upon the intensity of incident radiation. The number of emitted electron does not depend upon the frequency and wavelength of incident radiation. किसके ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हुए हैं उसकी वेलोसिटी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड फंडामेंटल लॉस, द काइनेटिक एनर्जी
and the velocity of this emitted electron, इसकी kinetic energy और इसकी velocity इलेक्ट्रॉन की, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी and wavelength of incident radiation, and it does not depend upon the intensity of incident radiation. इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्या चीज? ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी. The kinetic energy and the velocity of this emitted electron, it does not depend upon the intensity of incident radiation या intensity of incident photon, but it depend upon the frequency and wavelength of this photon. Intensity अगर ज्यादा हुई तो कितने number of electrons यहाँ निकलेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है. If there is intensity is higher, then the emission of electron is again higher. But the velocity and the kinetic energy of emitted electron does not depend upon the intensity. It is depending upon the frequency. And the kinetic energy and the velocity of this emitted electron is depending upon the it is depending upon the frequency and wavelength of this incident radiation, because we have the equation for we have the equation according to the Einstein, according to the photoelectric effect. So E is equals to h into nu. So where nu is a frequency. And again we have the relation for the speed of light, and this is C is equals to nu into lambda, where lambda is wavelength. Lambda is your wavelength, nu is your frequency. Clear? So again if I am taking nu is equals to this is C divided by lambda. If I am putting this equation, nu is equals to here, so E is equals to h C divided by lambda. Clear? So this relation shows that, so these are these functions. ये relations ये show करता है कि ये सारे इसके functions हैं. Clear? Then again there is, according to this Einstein theory of relativity, Einstein theory of relativity के हिसाब से यहाँ that is energy and mass are equivalent. एनर्जी और मास इक्विवेलेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट. So it means that again there is a continuously incidation, there is number of electron is emitted from this one, so it is maximum. और इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो या नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपका ज्यादा बनेगा, बिकॉज करंट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. There is maximum electron emitting from this emitter plate when the intensity is higher. So if the intensity is higher, so photoelectric current is higher. If the intensity is lower, the photoelectric current is lower. It means that the number of emissions of electron from the emitter plate is lower. और अगर यहाँ इसकी frequency, if I am increasing the frequency, अगर मैं यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं, तो इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड टेकिंग द ग्राफ बिटवीन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट ले लूं, इफ आई एम टेकिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड हियर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, if it is photoelectric current, if it is of electric potential, if I am increasing the frequency, अगर मैं इसकी frequency increase करूं, so we found that there is no photoelectrons are emitted from the surface. अगर हम लोग frequency अगर minimum value से अगर increase करना चालू करें, frequency किसकी, incident photons की frequency अगर increase करना चालू करें, so we see that there is no photoelectron is emitted from the surface. और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रीच हो जाएगी, मान के चलिए कि अगर हम लोग ने फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज से अगर इंक्रीज करना चालू कर दी, तो 1 हर्ट्ज कर दी, फिर बाद में 2 हर्ट्ज कर दी, बाद में 3 हर्ट्ज कर दी, 4 हर्ट्ज कर दी, 5 हर्ट्ज कर दी, और जब तक 9 हर्ट्ज कर दी तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, मान के चलते. और जैसे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज के ऊपर रीच हो गई, जैसे फ्रीक्वेंसी यहां से 10 हर्ट्ज से रीच हो गई, सो वी सीन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. And the frequency at which the first electron is emitted, the minimum frequency of incident photon at which the first electron is emitted, that concept is called as threshold frequency.
उस चीज को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. What is meaning of threshold frequency? The minimum frequency of incident photon या incident radiation at which electron just emitted from the emitter plate. So that term is called as a threshold frequency. And after threshold frequency is reaching, so we have nu suffix naught because we are receiving frequency and we are taking frequency. Frequency is denoted by nu, and this nu naught is denoted what? Threshold frequency. And after receiving the threshold frequency, continuously there is emission of electron, and we get the there is continuous flowing of current. And after one stage, there is no increasing in the current and no decreasing in the current. यहाँ से ये increase भी नहीं हो रहा, decrease भी नहीं हो रहा, and that terms is called as saturation current. इस चीज को हम लोग saturation current कहते हैं. What is meaning of saturation current? कि एक ऐसा करंट, मैक्सिमम करंट, from that value it cannot be increased and it cannot be decreased. So that is terms is called as saturation current. So after each terms we get the saturation current, and after the saturation current so we get the photoelectric work function. Clear? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अब हमारी अगर frequency which is less than, frequency we are denoted by nu, and the nu which is less than nu naught, there is no emission of electron. कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा. एंड व्हेन द न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और इक्वल टू न्यू नॉट, it is greater than or equal to nu naught, so there is emission of electron, and emission of electron we get the emission of electron, and emission of electron due to this is the emission, we get the photoelectric current होगा. So these are these fundamental laws for photoelectric effect. Clear? Again there is a maximum, बहुत सारे इसके fundamental laws हैं. ठीक है, तो और सामने चलते हैं इसके धीरे धीरे. ठीक है, तो यहां तक हमारे fundamental laws complete हो गए. Now second fundamental, again next third fourth जो भी होगा counting के हिसाब से. Now I next. According to this Einstein theory of relativity, ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वन फोटोन एब्सॉर्ब वन इलेक्ट्रॉन. यहां पे जो एक फोटोन अगर हम लोग मान के चलेंगे तो जैसे ही ये इंसिडेंट होगा तो ये इंसिडेंट होने के बाद में इट इज टोटली दैट वन फोटोन इज टोटली एब्सॉर्ब बाय वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेगा. And the energy which have this electron is equals to the energy of photon. जो एनर्जी इसके पास में होगी वो एक्चुअली एनर्जी वही होगी जितनी फोटोन की एनर्जी है. And that electron which is emitting from the surface, so we get the threshold frequency. So that's why this equation of this energy is changed by E is equals to H into nu naught. Clear? And when there is E is equals to H into nu naught, so we have this equation and we have the Einstein photoelectric equation. So Einstein photoelectric equation के हिसाब से जो energy use हो गई है, so energy जो incident हो गई है, it is utilized in two ways. So photoelectric work function and the kinetic energy. Photoelectric work function and the kinetic energy. Again, this is E is equals to, this is work done, photoelectric work function, and this is kinetic energy. So this is photoelectric work function, and photoelectric work function is nothing but H into nu naught because nu naught is a threshold frequency. So again this is H into nu naught plus kinetic energy 1 by 2 mv square. Again this is the value of E, and E is nothing but your H into nu. So H into nu is equals to H into nu naught plus 1 by 2 mv square, where H and nu, where H is a Planck constant, nu is a frequency of incident radiation. Again H is a Planck constant, and this is a threshold frequency. This is 1 by 2. This is mass. This is, we are talking about electrons, so we are taking mass of electron, and this is the speed of electron. So H into nu. So from this equation ये H into nu को हम लोग इधर ला ले, so H into nu minus H into nu naught is equals to, this is 1 by 2 mv square. So from this one H get common, so nu minus nu naught is equals to 1 by 2 mv square. So this is a second form of Einstein photoelectric equation.
ये सेकंड फॉर्म है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, सो दिस इज E is equals to work function plus their kinetic energy. So this is about the fundamental laws of photoelectric emission, the photoelectric effect. ये fundamental laws हो गया, clear? And after the fundamental laws, so we are describing the Einstein theory of relativity.